A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new poem from the book Flamingo of class 12th. The name of this very poem is Keeping Quiet, which has just written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is not the real name of the poet. It is the pen name. Pen name is the name in which you are writing under a fake name. Fake name is just like when you are giving yourself a specific name to hide your real identity. As the real name of this very poet is Ricardo Alistair Neftali Rios Basualto. There is an interesting story behind the changing of the name from Ricardo Alistair Neftali Rios Basalto to Pablo Neruda, which is his pen name, is that his father was a railway worker and he didn't like the profession of being poet. So he never allowed his son to write poetry. But Pablo Neruda found himself so much attached to the field of literature. So he just changed his name, he changed his identity and hide his identity from his father, and he usually start writing at the age of 13 under the pen name of Pablo Neruda. So he just taken the birth in the 1904 and he just got died in 1973. And later, legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. From this line, as this line refer that the pen name of Pablo Neruda was not so legal before 1947. In the 1947, he just gave this name as a legal name of himself and write down under this very pen name of whole his literature career. He is known as Chilean poet. Chilean poet means the poet which belongs to Chile. Chile is a country belongs to the South Africa and it has just extended through the Pacific Ocean's coast. It's about 3000 kilometer coast in Pacific Ocean. So he is also a poet, diplomat and the politician. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Nobel Prize is the prize. It can be given in the every field. It can be given in the social working as much as possible in the every field of science and also the history and also in the English. So this very prize has been generated in the literature to give some symbolism to their work, that if the Nobel Prize has given to a poet, that means that the poet has given some the noble cause in his poetry. So he has just awarded by the Nobel Prize for Literature in year 1971. It means just before the 2 year before he got died. He wrote in green ink. Here green ink symbolized the desire and hope. He always desired for the personal peace, unity, introspections, retrospections. All these things you can confine yourself. You can find all these things in his poem. So his writings are simple. Wherein lies their beauty? His writings means his writing, poetries, novel, novellas, etc. are so simple and lies their beauty. They have so beautifully attached to each other and the line are beautifully explained, and where his all the texts were originally written in Spanish, but necessarily many of the authors has translated that very poem in the English. The essence of this very poem, the essence of this very poem means the essence of
keeping quiet is based on introspection and retrospection. What do you mean by the introspection here? Introspection means whenever you find yourself attached to your feeling, and when you truly judge your feelings and ideas and thoughts of your own. And what do you mean the retrospection? Retrospection when you generally pick up something from the past, an event, any situation, and just start reviewing it. This very action is known as the retrospection. The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. In this very poem, the poet wants to make us feel that we need some soul searching, which is just needed for us now to be at peace with ourselves and others. It means he wants to prevail a kind of peace among human beings. Now, this is all about the Pablo Neruda. He has just done many of the things being a diplomat and the politician. When he had just got birth here between the 1904 till 1973, there was only not only two but only many of the wars, civil wars has just taken place. For example, in 19 you can say 14 approximation 15 16 world first war has been happened. Then in 1939 there was the world war second, and in between there was the Spanish civil war was taken place at that time. So he was just out of kind of idea whether the civil war or the war, any kind of war, is there any kind of beneficiality among the humankind or not. And we will find all this chaos in his poem, all this you can say disturbance which has just occurred by the wars in his poem, and he is just trying to make us so keep quiet, and he's just trying to us full of desire and hope, and to being so humble to each and every human being, and to show the humanity. So this very poem we will found each and every line just related to the humanity. Now let's start with the next slide. Here is the keeping quiet summary. We will find out some of the important and the common point which just lies throughout the poem in this very summary. Here's the keeping point is a piece poem written by Chilean poet Pablo Neruda. Keeping quiet Keeping quiet is a peace poem. It is a peace poem because it messages us to be in the peace and to maintain the peace, which is written by Chilean poet Pablo Neruda. The poet asks humanity to count number 1 to 12, and 12 being the number of hours shown in the clock or the number of the zodiac sign. Yes, we have just many of the things which are just related to the 12. In this very poem, the poet asks the humanity to us that we have to count 1, 2, 3, 4 till 12. Why only 12? Because 12 is the significant number in our life. 12 can be the month, 12 can be the number of hours, and it also the number of zodiac signs. We have 12 number of zodiac signs. For example, I have just the Leo, some other has Scorpion. So all these are the symbol of zodiac signs, and these are in counting are 12. So he requests everyone not to speak because languages creates barrier between people. He requests to us just not to speak any language for 1 to 12. It may be hours or maybe month. So he just requests us not to speak any language which has just created the barrier between the people. The moment when everyone stop moving their body will be very special and different, as we have never experienced such a moment before. The moment when everyone stop moving their body. If I will explain in Hindi for you, it will be like that. Whenever you will find yourself, it means
जब भी आप अपने आप को, अपनी बॉडी को बिना किसी मूवमेंट के कुछ देर तक रोक के रखेंगे तो वो स्पेशल मोमेंट होगा, वो स्पेशल एक्सपीरियंस होगा, वो स्पेशल मोमेंट होगा जो कभी नहीं हुआ। इस पोम में हमें पोएट जनरली 1 to 12 गिनने तक की सलाह देते हैं, क्योंकि 12 नंबर हमारे अगर हम क्लॉक में देखें तो 12 आवर्स होते हैं, और अगर हम अपनी राशियों को देखें तो वो भी 12 होती है, और मंथ भी हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो वो हमें रिक्वेस्ट करता है सिविल वॉर के यू कैन से जो चिले में चली हुई थी, उसकी वजह से वो चाहता है कि कोई भी कोई लैंग्वेज ना बोले, जस्ट कीप क्वाइट एवरीवन, ताकि जो लोगों के बीच में बैरियर बनी हुई है लैंग्वेज, जो अपर और लोअर कास्ट या अपर या लोअर सोसाइटी को दर्शाती है, उस लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए आप स्पीक आउट ना करें। तो ये मोमेंट हमारी हिस्ट्री का सबसे अनएक्सपीरियंस्ड यू कैन से स्पेशल मोमेंट होगा। The poet says that in this period, inactive the fishermen would not harm the whales. यहाँ पोइट कहना चाहता है इस पीरियड में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे कि फिशरमैन किसी भी वेल को हार्म नहीं करेंगे। यहाँ अगर मैं फिशरमैन बात करूँ तो यहाँ वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आम जनता का शोषण या उनको हार्म करता है। द साल्ट गैदरर्स विल नॉट हार्ट देयर हैंड्स, और जो आम जनता है, साल्ट गैदरर है, वो क्या है, वो अपने हाथों को क्या नहीं करेगी, हर्ट नहीं करेगी, यानी कि नुकसान या घाव नहीं होंगे उन्हें भी। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर विल अडॉप्ट अप्रोचिंग लाइफ टूवर्ड्स लाइफ। बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो नेचर को यानी प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो भी आप इस काउंटडाउन के बाद एक नया अप्रोच ले लेंगी टूवर्ड्स द लाइफ, जीवन के प्रति। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन द डेथ्स ऑफ innocent people will join their enemy and stand in unity with them, doing nothing. वो इंसान, वो आदमी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए, विक्ट्री के लिए, जो सिर्फ किस चीज़ पे बेस होती हैं, डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल, विल जॉइन द एनिमी, वो अपने एनिमीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, और एक दूसरे के जो एनिमी थे वो एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक यूनिटी बनाएंगे और लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉर और विक्ट्री इन दोनों के फेर में किन की मृत्यु होती है, द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, कोई भी किसी को हार्म नहीं करेगा, कोई किसी पर्सन के खिलाफ नहीं होगा। एवरी वन विल यूनाइट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड, हर कोई एक गठबंधन में होगा और एक दूसरे के एक्ट्स को पॉन्डर होगा। दैट मीन्स वो एक दूसरे को इनकरेज करेंगे एंड रियलाइज़ करेंगे द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स, जो वो कर्तव्य या कार्य कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स उनको रियलाइज हो जाएंगे। द पोइट क्लैरिफाइज हिज आइडिया एंड सेज फर्दर दैट ही डजंट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल। ही सेज, यहाँ पोइट क्लैरिफाई करना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि वो चुप होकर इंसान ऐसे ही व्यर्थ में अपनी ज़िंदगी बिता दे, बट ही वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर, वो चाहता है कि आप भले ही इडल नहीं हो, बट आपको वॉर भी नहीं करनी ही है। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सी ट्रक लेडन विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन वॉर्स के फेर में बहुत सारे ट्रक लद गए, किस चीज़ से, डेड बॉडीज से, वो भी किन की, इनोसेंट सोल्जर्स की। ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। इस पोएम में हम यही पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस को प्रमोट करता है। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली अचीव वंस गोल। पोएट कहता है हर कोई यहाँ कंटिन्यूसली कर रहा है, काम कर रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। पीपल आर थ्रेटनिंग बाई डेथ, उन्हें डेथ की धमकी देकर डराया जाता है। द फियर फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली, उनसे वो इतना काम कराया जाता है जहाँ तक उनकी अंत होता है, अंतहीन तरीके से उन्हें डर के नीचे उन्हें फोर्स से काम कराया जाता है, सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, ताकि वो अपनी हर एक चीज़ क्विकली अचीव कर ले।
सो इन दिस मैड रश, ये जो भागती हुई आम जिंदगी है, बहुत भागता हुआ हमारा यू कैन से लाइफ का मोमेंट है, हम इस मैड रश में दे डू नॉट रियलाइज द रिपरकेशन ऑफ देयर एक्ट्स, वो अपने एक्ट्स का, जो वो कर्म कर रहे हैं उनके भावहीनता को नहीं जानता कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना एम अचीव करना है, भले ही वो किसी को मार कर हो, चाहे वो किसी वॉर से हो, चाहे वो किसी विक्ट्री से हो। ही वॉन्ट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश। वो यहाँ हमें कहना चाहता है कि आप इस मैड रश से बाहर निकलें और अपने आप को शांत करें। ये भाग दौड़ लाइफ की कहीं जाकर भी रुकने वाली नहीं है। आप कितना भी कमा लें, कितना भी खर्च कर लें, आप कितने भी विक्ट्रीज हासिल कर लें, लेकिन व्हाट इज़ द एंड? एंड इज़ दैट यू हैव टू फेस द डेथ। Why don't you make yourself so relaxed for a while? So he wants to overcome the fear of death. वो कहना चाहता है कि जब सच्चाई हमारी क्या है, डेथ है, तो हमें इसके फियर से ओवरकम करना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए फॉर ए वाइल। मरने से पहले कुछ देर जीने की जो थीम है वो हमें यहाँ बताना चाहता है। We should know the results of our deed and celebrate our achievements. हम मेनली क्या करते हैं, हम अपने कार्यों की जो हमने किए होते हैं, हम उन्हें जानते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, और हम उसके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर हमें बुरा फील हो रहा है तो हम रोते हैं, और अगर अच्छा अचीवमेंट्स हो तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस पोम में यही कहना चाहता है कि आप एक दूसरे को गिरा कर नहीं, मार कर नहीं, दूसरे का हक छीन कर नहीं, साथ रहकर यूनिटी से एक दूसरे के साथ स्टैंड कीजिए यूनिटी में, जिससे आप एक दूसरे का जो नज़रिया है वो पहचान पाएंगे, जिसमें जो लड़ाई नहीं होगी तो बहुत सारे इनोसेंट्स लोगों की जान बच जाएगी। और जो लास्ट सच्चाई है वो है फियर ऑफ डेथ। जो डेथ है उसके फियर से हमें ओवरकम करना है। मृत्यु एक अप्रिय सच्चाई है जिससे हमें ओवरकम करना ही है। नाउ लेट्स मूव ओवर द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हमें कम्प्लीटली आइडिया हो चुका है कि हमारी पोम में क्या होगा। Here is some of the remaining part of this very summary. When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives. उसने हमें चुप करने के लिए इसलिए कहा है ताकि हम अपने ज़िंदगी का रियल पर्पस जान जाएं। Just like all the creation of nature undergo a rebirth with the change of season, similarly, keeping quiet will be a rebirth of the human soul. अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं कहोगे, वो नहीं करोगे और चुप रहकर सारे काम करोगे, तो यू विल नो द रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ। एंड उसी को हम पुनर्जन्म कहेंगे, किसका? ह्यूमन सोल का। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ। ये चुप रहना हमारी लाइफ को एक नया रास्ता देगा, नया अर्थ देगा। Again, the poet says that he will count till 12 and ask everyone to remain quiet while he lives. वो कहता है मैं यहाँ हूँ और मैं 12 तक गिनूँगा, 1 to 12 I will count and then ask everyone to remain quiet. वो उन सभी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चुप रहने के लिए कहता है जब तक वो वहाँ से चला ना जाए। Now let's start with our introduction to this poem. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. We have already been discussed all these things. He stresses upon being quiet, harmless to the human being, animal and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. यहाँ मेनली जो हमें थीम आउट होती है वो होती है यूनिटी, पीस एंड द इंट्रोस्पेक्शन। ये बहुत उम्दा थीम है इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, हम अपने आप को जानने की गतिविधियाँ करते हैं। सो हियर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइम स्कीम मीन्स क्या होता है? द राइम स्कीम इज़ द scheme when any of the poem rhyme similarly or maybe not similarly, it may be kind of free words. So this very
poem is written in the free verse and it doesn't follow any rhyme scheme. Free verse means there is no rhythm at the end of the line of the poem. There is no rhythmic word at the line of the poem. Now we are moving towards the first stanza. Here he says, now we will count to 12. हमारा पॉइंट एक जगह खड़ा है, वो अब एक यू कैन से क्राउड को संबोधित करके या फिर हम सभी को ही अपनी पोम के थ्रू बोलना चाहता है दैट नाउ वी विल काउंट 12. हम सभी 1 to 12 गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और अपने आप को क्या रखेंगे, चुप रखेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. ये अर्थ पे हमारे साथ पहली बार ऐसा होगा कि हम अपने ज़बान से कोई भी लैंग्वेज स्पीक आउट नहीं करेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. चलिए हम 1 सेकेंड के लिए पूरी अर्थ पे बिना नॉइस के 1 सेकेंड बिताते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहाँ आर्म्स के 2 मीनिंग है. एक तो हमारी भुजाएं और एक आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, वो हथियार जो हम एक दूसरे के खिलाफ उठाते हैं. तो इन the first stanza he wants to tell us that I will count 1 to 12 and we all have to keeping quiet. This will the first thing, this is the special moment on the earth which just happen for the first time when no one will speak any of the language, and we will stop for the second and we will not move our weapons so much. So here is also the explanation of this very poem, as the poet asks everyone to count up to 12 in their mind. In their mind, the number 12 represents the hour of the day and the month of the year. It may be else. So he wants all of us to be calm and still. People across the nations have to unite together. So they shall not speak their own language, rather they all keep quiet and speak the language of silence. What is this language of silence? The language of humanity, the language of nature, the language of earth. This will bring unity among the humans on the face of the earth, and for at last one moment no one shall move his arms either or signal or to fight or argue with each other. In the full of the paragraph we come to know that the poet gives us the instructions to keep quiet ourselves and to introspect ourselves so that we will unite together, as the different nation has the different language and this language creates the barrier among the people, because it also creates the upper and the lower standard among people. So he just count up the 12 and request us to just keep quiet for some while. Here is a literary device. Here says assonance. Assonance means the use of vowel O, E, A, E, I, O, U, whatever with that, but here is the O and E. Let's see. Now we will count to 12, not more our arms so much. So here the word O has been repeated twice, and E in the 12 is also the repetition of the vowel. Here the O, O, O and O. In this line we have just seen many of the time repetition of the vowel sound, so it has been called the assonance. What do you mean by the anaphora? When the two consecutive lines starting with the same word. In the same word means let's not speak any language and let's stop for 1 second. These let's and let's are the two words under which the two consecutive lines has starting with. What do you mean the alliteration here? Alliteration is the another literary device used by the poet, is that the repetition of the consonant sound at the start of two and more closely placed word. It means the repetition of the consonant sound. I hope you know what is the consonant sound. Consonant is the sound which differs from the vowel sound. Here the consonant sound we will. Here W and W, V and will, V and V. These are the consonant sound. W is repeated. So here in this paragraph there are only 3 literary devices: assonance, anaphora and alliteration is there. Here is the second stanza. It would be an exotic moment.
further continuation of the first paragraph, it has just given it would be an exotic movement. ये काफ़ी exotic movement होगा without rush, जहाँ कोई भीड़ नहीं होगी, without engine, जहाँ कोई इंजन का शोर नहीं होगा. We would all be together, हम सब एक साथ होंगे. In sudden strangeness, एक ऐसी विचित्रता के साथ जिसमें हम एक दूसरे को जानते भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे का मानवता का जो रिश्ता वो महसूस करेंगे. यहाँ इंजन की बात की गई है तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रिवेल किया गया है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के आड़ में आके जितने लोगों का शोषण किया जाता है उन लोगों को मेनली हम क्या करेंगे, विदाउट एनी बॉर्डर अपने साथ खड़ा रखेंगे. तो यहाँ हमें इंजन से इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिनोट करना है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहाँ कोल्ड सी है हमारा वर्ल्ड जहाँ कोल्ड इमोशंस बहते हैं, और फिशरमैन है वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ जो हमें हार्म करती हैं, जो लोअर क्लासेस को हार्म करती हैं. वुड नॉट हार्म वेल्स. यहाँ वेल्स कौन है, जो शिकार होती हैं, फिशरमैन का. और जो आम आदमी है वो किन का शिकार होता है, ब्यूरोक्रेट्स का, राइट. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट्स हैंड. जो इंसान, जो आदमी जो नमक इकट्ठा करते हैं, अब उनके हाथ भी नहीं घायल होंगे. क्यों? क्योंकि अब आम आदमी यहाँ बात की गई है जो हमेशा बड़े लोगों का बोझ उठाकर चलता है, दबता है, तो उन्हें भी ज़्यादा अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिशरमैन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, उन्हें हार्म नहीं करेंगे. और यहाँ एक और सिंबॉलिक मीनिंग है. यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग मैंने बता चुकी हूँ. यहाँ जो इसका डबल यू कैन से नेक्स्ट मीनिंग निकलता है, फिशरमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड वेल इज़ द नॉर्मल और मिडिल क्लास मैन और द पुअर मैन. बट यहाँ अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ फिशरमैन भी हमारे नेचर में जो वेल हैं उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, राइट. और रियल जो सोल्ट गैदरर्स होते हैं उनके हाथ ना फट जाते हैं, बहुत उनमें दर्द होता है और वो उस पेन को कई बार सहन नहीं कर पाते, और नेक्स्ट डे उन्हें काम पे जाना पड़ता है, उन्हें फिर से नमक खोदना पड़ता है और नमक को छांटना पड़ता है, जिस वजह से उनके हाथों की लकीरों में भी नमक भर जाता है, वो उन्हें बहुत हार्ट करता है. तो विद दिस पीस ऑफ काउंटिंग 1 to 12, here the poet wants to give us the suggestion that we would be together, हम साथ खड़े होंगे बिना किसी स्ट्रेंजनेस के. जहाँ फिशरमैन अपनी वेल्स का शिकार करना बंद कर देगा, लोगों को जो काम है वो एकदम से रुक जाएगा. बट यहाँ वो ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ आप सारे यू कैन से आइडल बैठे रहें और विदाउट एनी वर्क बैठे रहें. यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ आप किसी भी ह्यूमन बीइंग हो चाहे नेचुरल थिंग हो, आप उन्हें हार्म ना करें, उन्हें उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग उन्हें जीने दें. नाउ here is the explanation, and he says the same thing which I just tell you in the next time. When everything will come to the standstill, जो सब कुछ एक शांत खड़ा होगा, it will be a rare situation. वो वर्ल्ड पे एक ऐसा मोमेंट होगा बहुत रेयर. One will be in the rush, there will be no engines running. Everyone will be calm and quiet, unite with each other in the strange atmosphere. It will be a strange because it has never happened earlier. No person would be harming any other living thing, either for the food or to earn his livelihood. All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and damage they have caused to their body. Because of this illness, because of this standstill, everyone will get their time for themselves, also for the nature. Now let's move towards the literary device used in it. Alliteration has been used in the V word. W sound has been repeated. Sudden strangeness, S sound is repeated. His heart hand, the H sound is repeated. Now here is the only device is literary. Literary device is alliteration. So let's move towards the next stanza, that is third one. Here he says, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk out with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I will not truck
I want no truck with death. Now just see one thing. वो यहाँ सिंपली एक बात कन्वे करना चाहता है कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी वॉर नहीं करनी चाहिए। जो अपने आप को जो इंसान अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए ग्रीन वॉर्स करते हैं, वॉर विद गैसेस करते हैं, एटम वॉर्स करते हैं, वॉर विद फायर करते हैं, किस चीज़ के लिए? विक्ट्री के लिए। जो सर्वाइवर नहीं कर, जिनमें सिर्फ कौन लोग पिसते हैं, वो सर्वाइवर्स जो इनोसेंट होते हैं, would put on clean clothes and walked out with their brothers in the shade. उन्हें क्या होगा? वो एक क्लीन क्लोथ्स, यानी कि कोई भी, यहाँ क्लीन क्लोथ्स है मिलिट्री की जो यू कैन से ड्रेस है वहाँ से, और आप एक दूसरे की जो अलग अलग मिलिट्री ड्रेसेस हैं उनको अलग करके आप एक साथ ब्रदरहुड में आए और एक ही शेड में, एक ही छाया में बैठें और आराम करके देखें तो पता चलेगा कि देर इज़ नथिंग डिफरेंस बिटवीन द अदर कंट्री सोल्जर एंड आवर कंट्री सोल्जर। एंड डूइंग नथिंग मीन्स वो वहाँ रहकर कुछ ना करें, कोई वॉर में इंडल्ज ना हो। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं यहाँ, यानी कि पॉइंट यहाँ कहना चाहता है कि मैं यहाँ आपको कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता कि आप बिल्कुल ही टोटल इनएक्टिव हो जाओ अपनी आम जिंदगी में, बट मैं समझाना चाहता हूँ लाइफ क्या है और ये किस बारे में है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं नहीं चाहता ट्रक जो लदे हों किन से? डेथ से, मृत्यु से। और मृत्यु किन की होगी? उन्हीं सर्वाइवर्स की जो इन विक्ट्रीज के यू कैन से राउंड अप में, वॉर में पिसते हैं। Now let's move toward the explanation. He says, the people who exploit the green wealth of nature by deforestation or mining or the fishing in the deep seas, and the soldier who use weapon to kill fellow human being need some time to introspect to the consequences of their actions. यहाँ उन आदमियों की मैं बता चुकी हूँ, या उन आदमियों की बात कर रहे हैं जो अपनी खुद के बेनिफिशियलिटी के लिए डिफॉरेस्टेशन जैसे काम करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं डीप सीज में। और वो सोल्जर्स जिन्हें एक वेपन थमा दिए जाते हैं सिर्फ किस चीज़ के लिए? कि वो दूसरे ह्यूमन बींग्स को क्या करें? मारें, किल करें। तो उन्हें क्या चाहिए अब? इस इफ़ आई विल सेइंग दैट तुम्हें चुप रहना चाहिए फ्यू मोमेंट्स के लिए, तो इसलिए है कि दे नीड, एवरीवन नीड्स सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शंस। तो उन्हें क्या करना है? अपने एक्शंस के परिणाम को देखने के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, अपने आप के अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स की क्या करनी होती है? इंट्रोस्पेक्ट करना होता है। दे आर मेनली डूइंग देयर जॉब और फॉलोइंग ऑर्डर्स। मेनली जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने जॉब करते हैं और सिर्फ फॉलो करते हैं ऑर्डर्स। ही वॉन्ट्स देम टू पुट इन ए न्यू क्लॉथ। वो चाहते हैं कि वो उन्हें एक न्यू क्लॉथ दे, एक ऐसा टाइम पीरियड दे जिसमें ना तो किसी आर्मी का साइन हो, ना ही कुछ और हो। तो वो बिना किसी भेदभाव कि आप उस क्लॉथ से आप उस कंट्री को डिनोट कर रहे हो और आप इस कंट्री से इस कंट्री को डिनोट कर रहे हो, आप इन सब से हटकर एक न्यू क्लॉथ की तरफ जाएंगे, दैट इज़ टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ एंड रियलाइज दैट किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट ए विक्ट्री। आप सभी पीस वाले क्लॉथ्स हैं वो पहनकर ये अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स लाइफ कि आदमियों को मारने से कोई विक्ट्री नहीं होती है, यू आर ऑल डाउन टू बी फेलियर। ही वॉन्ट्स ऑल टू नो to be united as one, consider as our enemy to be our brother. हम अपने enemy को ही अपना brother बना लें, then we will always be at the united one. So he promoting brotherhood, peace and unity. Here's the theme of brotherhood, peace and unity and the introspection. He does not want us to stop our work but to take some time and analyze the result of our deeds. वो कहना चाहता है थोड़ा टाइम लीजिए और अपने किए हुए कर्मों का एनालाइज कीजिए, उन्हें देखिए कि आपने अभी तक कितने कर्म किए हैं और उनका रिजल्ट क्या होगा। Now we are moving towards the literary device which has just used by the poet in this very poem. Alliteration with the repetition of W and K sound in the clean clothes, which is repeated in the last stanza. Assonance, the use of vowel sound. Victory and with no words. Survivor. Victory, O is here. No, O is here. Survivor, O is here. Would put on clean clothes. So here is the O. Repeat
many times. So here is the assonance. Next is the repetition. Repetition of the word. Whenever the word is on the repetition mode, for example, here the war is on the repetition mode in this very stanza. So it is the repetition of the another literary device. So we generally three of the literary device in this stanza. Now let's move towards the fourth stanza. Here the poet says, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves or threatening ourselves with death. Now, explanation is here lie that poet wants to say that all human beings work endlessly. हर इंसान अपने जीवन के अंत तक काम करता है with the aim of completing their task. वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए. They are driven by a target of the survival and threatened to death. उन्हें अपनी मौत के धमकियों से यानी कि फियर से और अपने जो सर्वाइवल का टारगेट्स है उनकी वजह से वो अपने इस एंडलेसली वर्क को ड्राइव करते रहते हैं. एंड सो दे आर इन ए मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क्स. वो एक ऐसी अंधी यू कैन से और ऐसी रश में ऐसी भीड़ का हिस्सा हो चुके हैं जिसमें लोग सिर्फ अपने लिए यानी सेल्फिश जो हैं लोगों की भीड़ में इकट्ठा हो चुके हैं सारे लोग. ही सेज दैट परहैप्स इफ दे पॉज फॉर ए वाइल, अगर वो एक मिनट के लिए अपने बारे में सोचें, देन दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स. जो अभी तक उन्होंने अचीवमेंट्स की है अपने आप को अप्रिशिएट करें. एंड देयर लाइफ विदाउट बिकम हैप्पियर, वो तो उनकी लाइफ और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी. हम पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचते, हम कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, रेट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि हमने पास्ट में क्या अचीव किया है. वी जस्ट यूजुअली रन फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर. हम फ्यूचर की तरफ भागते हैं ना, और अचीव करना है और अचीव करना है, और उस अचीवमेंट के अकम्पलिशमेंट के चलते हम अपनी लाइफ की रियल हैप्पीनेस को खो देते हैं. यहाँ पॉइंट कहना चाहता है, सजेस्ट करना चाहता है, बाय कीपिंग क्वाइट, चुप रहने से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ. चुप रहने से हम अपने लाइफ का रियल पर्पज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन द टोटल ही वॉन्ट्स टू मेक अस रिलेटेबल विद द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन का रियल कर्तव्य क्या है उसके बारे में हमें पॉइंट अवगत कराना चाहता है. Now let's move towards the literary device of this very stanza, the alliteration. Alliteration here means the repetition of the consonant sound w, v, and single, so single. So here is the v, v, and the s sound. These two sounds are on the repetition mode, so it is the alliteration. And it is the enjambment. Enjambment is the jumping line. Whenever there is no punctuation mark at the end of the line and the line further continues itself with the for completing its full meaning. So that very line which has just no any kind of punctuation mark in the end is called the enjambment. So it is the enjambment line is that, and for once could perhaps a huge silence of threatening ourselves with death. Now let's move towards the fifth stanza. Here the poet says, perhaps the earth can teach us. शायद पृथ्वी या नेचर हमें सिखा सकता है. As when everything seems dead. जब सब कुछ हमें प्रतीत होगा मरा हुआ या फिर dead. And later proves to be alive. लेकिन वो बाद में प्रूव कैसे हो सकता है? एक जीवंत की तरह. Now I will count up to 12. मैं अब गिनने जा रहा हूँ 1 to 12 and you keep quiet and I will go. Just keep quiet if you have just so much inspired by my message throughout the poem. वो कहना चाहता है मैंने इतना कुछ बताया आपको स्टेंजाज में, तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों आपको 1 से 12 तक गिनने के लिए बोल रहा हूँ और चुप रहने के लिए कह रहा हूँ. ये अब आप समझ चुके होंगे कि आपको चुप रहना कितना ज़रूरी है. सो मैं अब गिन रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए कि आप में क्या चीज़ें हैं और आपके डीड्स का क्या आउटकम होगा, आपके कामों का, आपके कर्मों का क्या आउटकम होगा, और हमें क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है. चलिए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी. द पोइट सजेस्ट अस टू टेक ए टीचिंग फ्रॉम द नेचर. वो हमें नेचर से एक
सीख लेने की बात करता है। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस, वो कहता है हमें अर्थ से बहुत सारी चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे कि इन विंटर एवरीथिंग फ्रीजेस, विंटर में हर एक चीज़ फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। बिकम्स लाइफलेस, सब कुछ लाइफलेस जैसा हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंजेस अगेन एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। वही बात है, जब हम अर्थ को देखते हैं, हम उसके नेचर को देखते हैं, तो हर नेचर की अपनी ही एक अलग से पहचान होती है। विंटर सब कुछ फ्रीज करने के बाद कुछ ऐसे सीजन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, जो दोबारा से हर चीज़ चेंज कर देते हैं और हर एक चीज़ में जान भर देते हैं। Similarly, taking a pause and introspection into our lives, we will get into a new meaning. वो वही कहना चाहता है कि अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बहुत ज़्यादा मैड रश का हिस्सा बन चुके हो, भाग चुके हो, भाग दौड़ का हिस्सा हो चुके हो, जो बिल्कुल लाइफ लेस है, आप ज़िंदगी जीना जो है भूल चुके हैं। तो इसलिए आप टेक करें, पॉज लें, रुकें और इंट्रोस्पेक्ट करें खुद को जाने कि आप क्या हो, आपका जीने का मकसद क्या है। इंटू योर लाइफ विल गिव इट ए न्यू मीनिंग, ताकि ये आपकी लाइफ को एक नया अर्थ देगा। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, हम अपने लाइफ का रियल पर्पज़ समझने के काबिल बनेंगे और हमें समझ में आएगा कि हम जिस भाग दौड़ में भाग रहे हैं वो हमारे लाइफ का रियल पर्पज़ नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटीज़ को और नेचर को प्रिजर्व करना, उनके लिए ह्यूमैनिटी शो करना इज़ द रियल पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। इट विल बी लाइक ए रीबर्थ ऑफ आवर सोल। अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो हमारी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जिससे हमारी आत्मा बहुत कुछ सीखती है। द पोइट हैज़ कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पज़ ऑफ हिज मैसेज। उसने बता दिया कि शायद अब आप मेरे मैसेज का पर्पज़ समझ चुके होंगे। अब वो अपने यू कैन से ह्यूमैनिटी को बोलता है, ह्यूमन बींग्स को कहता है देम वंस अगेन टू टेक ए पॉज। वो कहता है प्लीज़ टेक ए पॉज, काउंट टिल 12 एंड वॉक आउट ऑफ द सीन। यहाँ से आप जा सकते हो, यू हैव जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स, आपने मुझे सुना और अब आप करिए ये काम कि आपको 1 to 12 गिनना है और आप इस सीन से वॉकआउट करिए और अपने आप को टाइम दीजिए, इंस्ट्रोस्पेक्ट कीजिए। Keeping on the scene open for the all people on the earth to experience this for time to come। और हर इंसान को अपने आने वाले टाइम और अपने रियल कर्तव्य का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस टाइम का एक्सपीरियंस के लिए हमें नेक्स्ट टाइम जो हमारा आने वाला टाइम है उसके लिए इंसानों में इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5th स्टैंजा एंड ऑल द पोएम हियर। Here is the end of this very poem. From throughout this very poem, we come to know that the poet wants to make us so much relatable to the nature and the humanity, and he also find out the relation between the natural elements and also with the activities of human being. He used the symbolism and he also used the many literary device to just give the colorful message to humanity regarding the human beings, animal, environment. He also suggested that he want to matter in maintaining the peace and to follow the justice for the humanity. Do not go for the mad rush. मत भागिए आप किसी ऐसी अंधी हुई भीड़ के पीछे जिसमें अंत कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो, सिर्फ आप अपने लाइफ को एक पहलू तक बांध रहे हो कि आपको उस रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंचना है, और जब आप अपने डेथ के करीब हो जाते हो तो आपको समझ में आता है व्हाट यू हैव जस्ट you can say lost and lose. So you have to keep yourself under the introspection of yourself, ताकि आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाए और आप अपनी सोल को सर्च कर पाएँ, आत्मा को ढूंढ पाएँ, आप अपने रियल पर्पस लाइफ के जो है उन्हें असली मायने में लागू कर पाएँ। So here is all about the poem. So this is all needed us for the translation and the explanation of this very poem. I hope that you have gone through all the things which are just important in a theme, literary device, about the poet, about the poem, explanation, and you have to go on also for the difficult word meanings.
So here is all about the poem keeping quiet. So here is the last thing. Just go for the your personal thing, your personal desire and hope, and just raise yourself among the mad rush. Thank you so much.